हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पर के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बात सबा। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहा, ऐसे खुशबू चमन के गुलों में कहा, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, छोड़ कर हम मदीना न जाए कहीं। यूं तो जन्नत में सब है, मदीना नहीं। यूं तो जन्नत में सब है, मदीना नहीं। और जन्नत मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं। सारी दुनिया में ऐसा नजारा नहीं, ऐसा मंजर जमाने न देखा नहीं। ऐसा मंजर जमाने न देखा नहीं, जैसा मंजर मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम मुबारिक अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम मुबारिक अला मुहम्मद।
मेरी जिंदगी हुसैन है, मेरी बंदगी हुसैन है, मेरी जिंदगी हुसैन है, मेरी बंदगी हुसैन है, मेरी जिंदगी हुसैन है, मेरी बंदगी हुसैन है। मिट गया जहां से यजीद, मिट गया जहान से यजीद, और गली गली हुसैन है। मिट गया जहान से यजीद, और गली गली हुसैन है उसी के दिल में मुस्तफा, है उसी के दिल में मुस्तफा, जिसकी दिल लगी हुसैन है, जिसकी दिल लगी हुसैन है। मेरी जिंदगी हुसैन है, जिसकी दिल लगी हुसैन है, मेरी जिंदगी हुसैन है। सजदे की तो फिक्र छोड़ दे, सजदे की तो फिक्र छोड़ के, सजदे की तो फिक्र छोड़ दे, सजदे की तो फिक्र छोड़ दे, इस कीमती हुसैन है, इस कीमती हुसैन है। मेरी जिंदगी हुसैन है, इस कीमती हुसैन है, मेरी जिंदगी हुसैन है। या नबी तुम्हारे सहन में, या नबी तुम्हारे सहन में, तीसरा अली हुसैन है, तीसरा अली हुसैन है। मेरी जिंदगी हुसैन है, तीसरा अली हुसैन है, मेरी जिंदगी हुसैन है। कह गए मुईनुद्दीन ये, कह गए मुईनुद्दीन ये, कह गए मुईनुद्दीन ये, कह गए मुईनुद्दीन ये, पनाह दीन की हुसैन है। मेरी जिंदगी हुसैन है, पनाह दीन की हुसैन है, मेरी जिंदगी हुसैन है। रहम ने बेट लेके ये या कहा, रहम ने बेट लेके ये कहा, यूं लगे जली हुसैन है। मेरी जिंदगी हुसैन है, यूं लगे जली हुसैन है, मेरी जिंदगी हुसैन है। जाता है जो खुल्द की तरफ, जाता है जो खुल्द की तरफ, वो रास्ता गली हुसैन है। मेरी जिंदगी हुसैन है। मुस्तफा है नूर किबरिया, मुस्तफा है नूर किबरिया, नूर की तली हुसैन है। मेरी जिंदगी हुसैन है, नूर की तली हुसैन है।
शामियों सुनो मैं गाजी हूँ, शामियों सुनो मैं गाजी हूँ, मेरा वली हुसैन है और मेरा वली हुसैन है, मेरी जिंदगी हुसैन है। गाजी बन गई कभी अली, गाजी बन गई कभी अली, अली या कभी हुसैन है, मेरी जिंदगी हुसैन है, मेरी जिंदगी हुसैन है, मेरी जिंदगी हुसैन है। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ये दिल भी हुसैनी है, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। अलहम्द के अपना तो ईमान भी हुसैनी है, अलहम्द के अपना तो ईमान भी हुसैनी है, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। रौनक है मसाजिद में शबीर के सदके से, रौनक है मसाजिद में शबीर के सदके से, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। मिंबर
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। छोड़ कर अब तेरा आस्ताना, छोड़ कर अब तेरा आस्ताना, करबला जा रहा हूँ मैं ना छोड़ कर अब तेरा आस्ताना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना, छोड़ कर अब तेरा आस्ताना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना। भूखे प्यासे बहादुर चले हैं, सरहदे ली पेरा खा चले हैं। भूखे प्यासे बहादुर चले हैं, सरहदे ली पेरा खा चले हैं। हश्र में आपको सर पिलाना, हश्र में आपको सर पिलाना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना। हश्र में अब को सर पिलाना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना। एक सजदा में ऐसा करूँगा जिसको महशर में पूरा करूँगा। एक सजदा में ऐसा करूँगा जिसको मैं शर में पूरा करूँगा। सर कयामत के देने उठाना, सर कयामत के देने उठाना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना। सर कयामत के देने उठाना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना। हर यजीदी को आया पसीना, प्यास अज़गर ने खोला जो सीना। हर यजीदी को आया पसीना, प्यारे असगर ने खोला जो सीना। क्या खाक में
दुश्मनों को मिला ना, खाक में दुश्मनों को मिला ना, करबला जा रहा हूँ मैं ना, खाक में दुश्मनों को मिला ना, करबला जा रहा हूँ मैं ना, चोर कर अब तेरा आस्ताना, चोर कर अब तेरा आस्ताना, करबला जा रहा हूँ मैं ना। His Eminence Hazrat Allama Maulana Imran Ali Jabbar Sahab, Namrakatul Aliyah, respected Ulama Kiram, Father Kiram, elders, mothers and sisters, viewers at home. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, I'd like to thank our Janab Sabir Sheikh Ashrafi and family, our sister Nasira Ashrafi and family, for, mashallah, giving me this opportunity yet again. I don't know how many years in a row since I've been here. Alhamdulillah, mashallah, always a beautiful program, Nurani program, accepted program, and alhamdulillah, as you can see, Sabir Bhai and family didn't lack any effort, mashallah, in making sure that they go all out for this beautiful program. Alhamdulillah, in the full 10 days of Muharram, Allah Ta'ala give them barakah, inshallah, and give them the strength to continue for many, many, many years to come, and the children's strength to continue, inshallah. Inshallah, there's been a request for all the men to please come forward onto the front, onto the green carpet, inshallah. For there is a lot of ladies that are coming in still, and there's not much space. So please, inshallah, brothers, if you can come onto the green carpet, inshallah. Jazakallah. Without much further ado, alhamdulillah, we have our Hazrat Maulana Sahib, inshallah, who will be giving us his discourse and lecture, inshallah. So without taking much of his time, milke pare mohabbat ke saath, all together have a muhabbat, milke pare mohabbat ke saath, durood sharif, sallallahu alayhi ya Rasool. Habib Allah sallallahu alayhi ya Rasool Allah wa sallam alayka ya Habib. Hasnain ke sadqe mein khata maaf ho meri. Hasnain ke sadqe mein khata maaf ho meri. Zahra ke sadqe mein khata maaf ho meri. Main apni khataon pe शर्मसार हूँ मौला. मैं अपनी खताओं पे शर्मसार हूँ मौला. बोलो ना मैं
खताकार हूँ मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला। से सुभान one tree in Jannah. Say Subhanallah again. Inshallah. Inshallah, let us all recite together Lafz al-Muhabba. You know, everyone knows, mashallah, by now that I love when you interact with me and recite with, because alhamdulillah, it feels that your, I think the azan is going on. We'll just pause, inshallah, for a few minutes. Inshallah, Isha Jamaat will be made after the program, immediately after the program in Jamaat, inshallah. Jazakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Inshallah, to continue with the program, let us all recite together Lafz al-Muhabba, inshallah. Allahumma salli ala Sayyidina wa Mawlana Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Mawlana Muhammad. Muhammad ke saath. Allahumma salli मौलाना मोहम्मद, प्यारे नबी की जात पे रब का दुरूद है, प्यारे नबी की जात पे रब का दुरूद है, सरकार दो जहां पे सबका दुरूद है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद। से लाउडली अल्लाहुम्मा सल्ली व मौलाना मुहम्मद। जन्नत में सैयदा की, जन्नत में सैयदा की कनीज़े जहार है, जन्नत में सैयदा की कनीज़े जहार है। या रब मेरी दुआ है मेरी माँ वहाँ रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना। जन्नत में मुस्तफ़ा के नवासे जहाँ रहे। या रब मेरी दुआ है
वहाँ रहे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाह के शेर हैदर कर्रार पर दुरूद। अल्लाह के शेर हैदर कर्रार पर दुरूद। हजरत हुसैन हजरत हसन हुसैन के किरदार पर दुरूद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। ज़ैनब की बारगाह में, ज़ैनब की बारगाह में सलामे नियाज है। ज़ैनब की बारगाह में सलामे नियाज है। जो मुर्तज़ा की लाडली, जो मुर्तज़ा की लाडली ज़हरा का नाज है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदिना ज़ैनब व सय्यदिना हसन व सय्यदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। हाल दिल किसी को सुनाए आपके होते हुए। हाल दिल किसी को सुनाए आपके होते हुए। क्यों किसी के दर पे जाए आपके होते हुए। क्यों किसी के दर पे जाए आपके होते हुए। We are all the ghulam and the ashiq of the Bajdan Park. Allahu Akbar. Recite this with me, inshallah. मैं गुलाम पंजत हूँ, ये मेरी पहचान है। मैं गुलाम मौला अली हूँ, ये मेरी पहचान है। मैं गुलाम सैयदा हूँ, ये मेरी पहचान है। मैं गुलाम हसन हुसैन हूँ, ये मेरी पहचान है। और मैं गुलाम मौला अब्बास हूँ, ये मेरी पहचान है। मैं गुलाम मौला अब्बास हूँ, ये मेरी पहचान है। गम मुझे क्यों कर सताए आपके होते हुए। हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए। अपना जीना अपना जीना अपना जीना अपना मरना अब इसी चौखट पे है। अपना जीना अपना मरना अब इसी चौखट पे है। हम कहाँ
सरकार जाए, हम कहाँ सरकार जाए, आपके होते हुए हाल दिल इसको सुनाए, आपके होते हुए Alhamdulillah. A new kalam for me to recite, inshallah, for the first time before we move on to Mawla Ali and the Ahlul Bayt, inshallah, of the Ahlul Bayt, inshallah. A few ashar, beautiful kalam, alhamdulillah. So many ashar, but so beautiful. So try and recite a few ashar of this beautiful kalam, inshallah. क्या डराएंगे, क्या डराएंगे मुझे सारे ज़माने वाले, क्या डराएंगे, क्या डराएंगे मुझे सारे ज़माने वाले, मेरे वारिस है मोहम्मद के घराने वाले, मेरे वारिस है मोहम्मद के घराने वाले, चरखे नेज़े पे वो कुरान सुना देते हैं, चरखे नेज़े पे वो कुरान सुना देते हैं, और जिनको कुरान मुहम्मद है पढ़ाने वाले, जिनको कुरान मुहम्मद के पढ़ाने वाले। अल्लाह से सुनिए हज़रत मौलाना साहब, वो मुहम्मद के नवासे हैं हुसैन इब्न अली। We are all the ashik of the Fajr part. This is very carefully. वो मुहम्मद के नवासे हैं हुसैन इब्न अली, सजदाए असर में गर्दन को कटाने वाले, सजदाए असर में गर्दन को कटाने वाले, है मुझको दुनिया के सहारों की जरूरत क्या है मुझको दुनिया के सहारों की जरूरत क्या है मुहाफिज मेरे पंजतन के घराने वाले, है मुहाफिज मेरे पंजतन के घराने वाले, क्या डराए कौन कहता है कि पानी की जरूरत थी उन्हें, वो तो है हश्र में कौसर, वो तो है हश्र में कौसर के पिलाने वाले, हर गरी साए रहमत में है रहते आजिज़, गम शबीर में अश्कों को बहाने वाले, और सदका मौला अली
हश्र में कह देंगे हुजूर आजा दामन में मेरी नात, आजा दामन में मेरे नात सुनाने वाले, क्या डराएंगे मुझे सारे जमाने वाले। नारे तकबीर, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हम तो है अली वाले, अली अली हम तो है अली वाले, अली अली कहते हैं, हम तो है अली वाले, हम तो है अली वाले, अली अली कहते हैं, जो अली के हो जाए, हो जाए, हो जाए, जो अली के हो जाए, कब किसी से दर्द है, जो अली के हो जाए, कब किसी से दर्द है, हम तो है अली वाले, अली वाली हक का है, पीर है ये वलियों का, अली वाली हक का है, पीर है ये वलियों का, अली जैसा पीर नहीं, अली जैसा पीर नहीं, ये सारे वलियों कहते हैं, अली जैसा पीर नहीं, ये सारे वलियों कहते हैं, हम तो है अली वाले, अली का जो दीवाना उसका इख्तियार है ये, वो जन्नतों के घर बैठे, घर बैठे, घर बैठे, वो जन्नतों के घर बैठे, जो अली 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 करते हैं, हम तो है अली वाले, जिसका हूँ मैं मौला, उसका है अली मौला, नबी ने ये फरमाया, नबी ने ये फरमाया, जलने वाले जलते हैं, हम तो हैं अली वाले, हम तो हैं अली वाले, अली अली कहते हैं, हम तो हैं अली वाले। ला इलाहा की झूमने लगा, ला इलाहा की झूम झूम झूमने लगा, सजदा कर रही है फातिमा, सजदा कर रही है फातिमा, सैयदा तू बड़ी सखी है फातिमा,
मोहसिन मोहब्बत के साथ तू बड़ी सख्त मोहसिन अली के फातिमा और दीन जिसने जिंदा कर दिया दीन जिसने जिंदा कर दिया उस हुसैन की माँ है फातिमा उस हुसैन की माँ है फातिमा सैयदा तू बड़ी सखी है फातिमा और मुस्तफा है जाने कायनात मुस्तफा है जाने कायनात मुस्तफा की जान फातिमा तू बड़ी सखी है फातिमा सैयदा तू बड़ी सखी है फातिमा खुदा पाक का प्यारा खुदा पाक का प्यारा हुसैन जिंदा है खुदा पाक का प्यारा हुसैन जिंदा है नबी की आँख का तारा नबी की आँख का तारा हुसैन जिंदा है मोहब्बत के साथ नबी की आँख का तारा हुसैन जिंदा है और अली का दुलारा हुसैन जिंदा है हो जाने फातिमा ज़हरा हो जाने फातिमा ज़हरा हुसैन जिंदा सुनी जो अपनी तिलावत वो नोगने कलाम हक ने पुकारा हुसैन जिंदा है खुदा पाक का प्यारा हुसैन जिंदा है सुभान मीर के पर मोहब्बत के साथ दुरूद से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या हबीबल्लाह बाज़िब सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल हबीब मिला अली का घराना मिला अली का घराना कि हम हुसैनी हैं मिला अली का घराना कि हम हुसैनी है ये कह रहा है ज़माना ये कह रहा है ज़माना कि हम हुसैनी है हुसैनी है मिला अली का घराना कि हम हुसैनी है नकीरों
नकीरों भेजो है रब ने सवाली कहने को, नकीरों भेजो है रब ने सवाली कहने को, खुदा को जा के बताना, खुदा को जा के बताना कि हम हुसैनी है, हुसैनी है। मिला अली का घराना कि हम हुसैनी है। हमारे साथ में अब्बास, हमारे साथ में अब्बास की हिमायत है। हमें नाक दिखाना, हमें नाक दिखाना कि हम हुसैनी है, हुसैनी है। मिला अली का घराना कि हम हुसैनी है। यजीद सुन ले ये कहती जमीन करबल है, यहाँ संभल, यहाँ संभल के तो आना, यहाँ संभल के तो आना कि हम हुसैनी है। मिला अली का घराना कि हम हुसैनी है। सुभान अल्लाह। आखिरी कलाम इंशाअल्लाह। It's a kalam we know, we all know this kalam inshallah. And we are all here because we are all the asik and the lovers of the Ahlul Bayt and Panjatan Park inshallah. Allah Ta'ala always keep the nigah and the sayah of the Panjatan Park on each and every one of us inshallah. Ameen. Milke par Muhammad ke saath durud sharif Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa sahbihi wa barik wa sallim wa sallam. Alhamdulillah, Hazrat Maulana Sahib will take the mic after me inshallah. And let us give Hazrat Maulana a warm welcome inshallah. Let us rejuvenate our hearts inshallah with the love of the Ahlul Bayt with this beautiful kalam inshallah. All recite together on Muhammad inshallah. मैं तो पंज तने का गुलाम हूँ, मैं तो पंज तने का गुलाम हूँ। मोहब्बत के साथ मैं तो गुलाम हूँ, मैं गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ। मैं तो पंजतने का गुलाम, मुझे इश्क है तो खुदा से है, मुझे इश्क है तो रसूल से, ये करम है सारा बतूल का। मेरे मुंह से आए महकी सदा, जो मैं नाम लूं तेरा झूम के। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम। मुझे इश्क से वो सबन से है, मुझे इश्क सारे चमन से है, मुझे इश्क उनके वतन से है, मुझे इश्क उनकी गली से है, मुझे इश्क है तो अली से है, मुझे
मुझे इश्क है तो हसन से है, मुझे इश्क है तो हुसैन से, मुझे इश्क है तो हुसैन से, मुझे इश्क शाह ज़मर से है। मैं तो पर जतन का गुलाम हूँ, मैं तो पर जतन का गुलाम। हुआ कैसे से वो सर जुदा, जहाँ इश्क हो वही करबला। मेरी बात उन्हीं की बात है, मेरी सामने वही जात है, वही जिनको शहरे खुदा कहे, जिन्हें बाब सल्ले अला कहे, वही जिनको आले नबी कहे, वही जिनको ज़ाते अली कहे, वही पुख्ता है मैं तो खाम हूँ। One more time. मैं तो पर मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम बिने गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। उलमा अहले सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिनिल अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़क़द कान अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी व सनदी हबीबी या रसूलुल्लाह। सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या रहमतल लिल आलमीन, व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। Before I continue with my talk for today, I'm going to give you a snippet in Urdu, inshallah,
and those who understand Urdu will understand what I'm saying, inshallah. And the person who had written this down had in mind a conversation that took place between Mawla Hussein alayhi salam and Yazid. And he very, very beautifully says कि यजीद बोला बड़ी फौज मेरे हाथ है. यजीद बोला बड़ी फौज मेरी हाथ है. हुसैन बोले नतीजा खुदा के हाथ में है. हुसैन बोला नतीजा खुदा के हाथ है. यजीद बोला मैं हकीम हूँ जबर करता हूँ. हुसैन बोले मैं सैयद हूँ सबर करता हूँ. यजीद बोला कफन तक ना डाला जाएंगे. हुसैन बोले कि जन्नत से जोरा आएंगे. यजीद बोला उधर मौत और इधर खजाना है. हुसैन बोले कि नाना को मुंह दिखाना है. For those who understand it, alhamdulillah. For those who don't understand it, यजीद बोला बड़ी फौज है मेरे हाथ है. Fauj is army. Yeah? So Yazid is telling that I have a very, very huge army. But Imam al-Hussein is saying to him that natija khuda ke haath mein hai. You can have a big army, but everything lies in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. Yazid bola main hakim hu jabar karta hu. Yazid is saying I am powerful and I am strong. Imam al-Hussein bole main sayyid hu main sabr karta hu. He says I am a sayyid. I am from the family of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and we are those people who have patience. Yazid bola kafan tak na dala jayenge. He says that we will kill you, and you know there will be nobody to even give you kafan or put kafan for you. Imam al-Hussein says, Jannat se jora aayenge, that leave alone the people of this world and leave alone your army and you, our kafan will come from Jannat. And then Yazid says, ke udar maut hai aur idhar khazana hai. On that side is death, and on this side is the treasures. Imam al-Hussein ne bola ke nana ko muh dikhana hai. I am here to save the deen of Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. If I have to go on that side where the khazana is, how am I going to show my face to Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ummat-e-Islamiyya, yesterday I discussed with you the final address of Imam al-Hussein to his family members and to the Yazidi army. And we entered the battlefield of Karbala, where Imam al-Hussein was now left alone to fight. His family members, his nephews, his sons, his brothers, his uncles, they were all martyred. Now he's left alone to save the deen of Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. But before we go further, this mehfil that we are sitting is a mehfil in honor of the Shuhada Dast-e Karbala. We are seated here and we are remembering the Ahlul Bayt because Rasulullah sallallahu alaihi wasallam had told us to love and remember the Ahlul Bayt. To such an extent that it had been stated when it came to Mawla Kainat, Mawla Ali Karamallahu Wajhul Kareem,
it had been stated that just to look at the face of Mawla Ali is ibadat. Just to look at the face of Mawla Ali is ibadat. And Mawla Ali is Ahlul Bayt, he's Panjatan Pak. We believe in one thing, that an innovation, a bid'ah, is something which did not happen at the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ne? But if it happened at the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, it cannot be a bid'ah, it cannot be an innovation. So loving the Ahlul Bayt, sitting in the mahafil of the Ahlul Bayt, remembering the Ahlul Bayt, praising the Ahlul Bayt, honoring the Ahlul Bayt is not bid'ah, it's not an innovation. It is the farman of Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I just want to make that clear before I go on. Moving back to the Battle of Karbala, Imam al-Hussein stands alone in the battlefield and is now facing the army of Yazid. One by one from the army of Yazid enters the battlefield. Imam al-Hussein fights and he kills them. Until we have a person by the name of Jabir ibn Qahir Qumi. He comes in the battlefield and he shows off his strength. He shows off his strength and he shows off and he speaks about the warriors of Syria and Iraq. How strong they are. The energy that they have. How they can fight. And as he comes to Imam al-Hussein, Imam al-Hussein picks up the Zulfiqar, and with one sway of the Zulfiqar, Imam al-Hussein added another person's name on the list of the people of Jahannam. With one sway of the Zulfiqar. Initially he came in Bahadur, courageous, praising himself, saying how strong he is. But with one swing of the Zulfiqar, the sword of Mawla Ali that was gifted to Imam al-Hussein, he was murdered. He was killed by Imam al-Hussein. Imam al-Hussein then stands in the battlefield and he calls out. He calls out to the army of Yazid and he says to them, don't send me all these kind of people. Send me the bravest from your army. One man standing alone. Hundreds of people standing there from the army of Yazid. Imam al-Hussein makes a statement. Send me the bravest from your army, the strongest from your army. On hearing this, a person by the name of Bakr ibn Suhail, Yemeni, he became very, very angry and he told to Ibn Asad, allow my sons to go and fight Hussein. He says, allow my sons to go and fight Hussein. Ibn Sa'd gestured to the son of Bakr ibn Suhail Yemeni, and the first son goes in the battlefield. When the son goes in the battlefield, Imam al-Hussein says that how unfortunate. He's now speaking to Bakr ibn Suhail Yemeni. He says, how unfortunate are you that you send your son on the battlefield and you will stand there
and watch your son being slain and murdered on this battlefield. Imam al-Hussein kills the son, and on seeing this, the father becomes very, very enraged. He becomes very, very angry. Without asking permission from anybody, he now goes into the battlefield. Forcefully, he goes into the battlefield. And when he goes into the battlefield, he takes a spear to attack Imam al-Hussein. And when he takes the spear to attack Imam al-Hussein blocks the spear with the Zulfiqar and the shield of Hazrat Amir Hamza, the uncle of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He blocks the spear, and he kills this person by the name of Bakr ibn Suhail Yamani. Allahu Akbar. On seeing this, it's a very, very long waqi. I can go and give you names of each person that have walked into the battlefield, but it's going to take a lot of time. On seeing this, the Yazidi army decided that it's of no use us going into the battlefield one by one because we are going to get murdered. So they came up with a plan, and they decided that now they will go in the battlefield in groups so that they can surround Imam al-Hussein, so that Imam al-Hussein won't be able to do anything. So what they decided to do first, before going in as the first group, they sent a lot of spears towards Imam al-Hussein. These spears hit the horse of Imam al-Hussein. Zuljinan, it hit the horse of Imam al-Hussein. So much of spears pierced the horse of Imam al-Hussein that it started to bleed so much that the horse itself fell and became unconscious. He died. Now Imam al-Hussein is on his feet. He is no more on a horse. He is now fighting in the battlefield of Karbala. Then this group now goes in and they surround Imam al-Hussein. When they surround Imam al-Hussein bravely fights and kills every one of them that were there. Until Ibn Sa'd decides that now we cannot take it anymore, because he killed when we went one by one. Now we went by groups. He killed the groups. So now they started to send spears to Imam al-Hussein. Allahu Akbar. Spears hit Imam al-Hussein. His entire body was filled with spears. Imam al-Hussein, with these spears filled in his body, he still fights in the battlefield. And only for one reason. That is to save the deen of Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. It was not for his own benefit. It was not to show that I am Ahlul Bayt, I am Hussein. It is not to show the people that I am the hero. No. Because Imam al-Hussein came from that family which was the most simplest family that ever came in the face of this dunya. Though Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wasallam was do jahan ke tajdar, the king of both the worlds, but he still slept on the floor. He still wore clothes that should be tattered and torn, that they should sew and he should use. This is the family from where Imam al-Hussein came. Imam al-Hussein fought bravely until the time of namaz. And the only thing that stopped the sword of Imam al-Hussein was the azan. Once the azan went, or the namaz time was up, Imam al-Hussein asked for permission
from the army of Yazid, from Ibn Sa'd, Ibn Ziyad, he asked for permission to read his namaz. And remember, this was Imam al-Husayn's last namaz physically in this dunya. It was going to be his last namaz. It was going to be his last sajda. And that very same sajda of Imam al-Husayn saved the deen of Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. And today, we forget that sajda. We do not put our head down in sajda. We do not ask from Allah subhanahu wa ta'ala. But Imam al-Husayn left this lesson behind for us. That do not forget Allah. Do not forget the worship of Allah. Do not forget the ibadat of Allah. And if you seek anything, seek from Allah subhanahu wa ta'ala jalla wa ala. Imam al-Husayn goes to read his namaz. And that's when these munafiqs, these Jahannamis, these Yazidis had decided that this is the only way we can get rid of Imam al-Husayn. Allahu Akbar. And when he went for sajda, Imam al-Husayn was martyred whilst in sajda. His head was taken off his body. Imam al-Husayn was made shaheed. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ummat Islamiyah, after Imam al-Husayn was martyred, they got the horses. The men of Yazid got their horses to trample on the bodies of the shuhada. Killing them was not enough. They were not satisfied. They now decided to go on get their horses to trample the blessed bodies of the household of Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, to such an extent where they started to take off the clothes of the blessed body of Imam al-Husayn. They started to remove the clothes from the blessed body of Imam al-Husayn. It had been stated that the blessed Jubba Mubarak of Imam al-Husayn, a person by the name of Qais ibn Muhammad ibn Ashhat, had taken the Jubba of Imam al-Husayn. The pants of Imam al-Husayn was taken by Bahar ibn Qab. The blessed shoes of Imam al-Husayn was taken by Aswab ibn Khalid. They have taken the turban of Imam al-Husayn. That person who took the turban was Amr ibn Yazid. The sheet that was covering Imam al-Husayn was taken by Yazid ibn Shibl. And the ring and the armor of Imam al-Husayn was taken by Sinan ibn Anas al-Nakhi. These were the people who took this stuff away from Imam al-Husayn. After making Imam al-Husayn shaheed, after killing him, they were still not satisfied. To that extent, where they took the blessed head of Imam al-Husayn on a tip of the sword and they marched the streets of Kufa to show that they have got victory, they have killed the household of Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. But in reality, for them in this world, they got victory, but in reality, victory lied with the household and the Ahlul Bayt of Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Why? Because these great personalities of the noble household of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam gained their maqam in Jannat. And because of the doing of these munafiqeen, Allah subhanahu wa ta'ala had already given them Jahannam. And it has been stated that on the day of Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala will put them in Jahannam. He will take them out back from Jahannam and he will carry on putting them back in Jahannam. He will take them out and put them back in Jahannam. And Allah will continue punishing them until the Shuhada-e Daste Karbo Bala are pleased with what Allah subhanahu wa ta'ala is doing. I'm not saying this. I'm not saying this. A great alim of his time,
is mentioning in his discourse, Hazrat Allama Maulana Shafi Karvi rahmatullahi ta'ala alayhi. And I've mentioned this before, that we cannot do justice to Karbala or the waqiyats of Karbala. But when it came to the mahafils of Hazrat Allama Maulana Shafi Karvi rahmatullahi ta'ala alayhi, every person, big or small, rich or poor, black or white, no matter who you was, whoever sat in his mehfil never left that mehfil without weeping. They never left that mehfil without weeping. You know why? Because when Maulana Shafi Karvi spoke, it was as if he took you to the battlefield of Karbala. And today I speak from his writing, Sham-e-Karbala, by Hazrat Maulana Shafi Karvi rahmatullahi ta'ala alayhi. And then you get people who will tell to you, why are you mourning the 10 days of Muharram? What is the reason for you to mourn the 10 days of Muharram? Why, when you hear the waqiyats of Karbala, why do you cry? Why do you shed tears? Where is it proven or where is it said that you have to shed tears? Ummat-e-Islamiyah, Karbala did not even take place when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shed tears himself. Karbala did not take place when Jibreel Amin brought the message to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that your grandson will be made shaheed on this plains called Karbala, and gave him the sand and told to him the day it turns red, then know that Hussein has been made shaheed. Just on hearing this, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam started to cry. It had been stated that on the day of Karbala, the skies wept blood. The malaika in the arsh of Allah cried when Imam al-Hussein was made shaheed, and when they saw the atrocities that were put upon the Ahlul Bayt. So shedding tears and mourning the shuhada-e daste karbo bala is the sunnat of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. It is the sunnat of the malaika. It is the sunnat of the jinnat. Every jinnat that Allah created wept on the 10th of Muharram and the tragedy of Karbala. If the malaika could shed tears, the sky shed tears, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam himself shed tears, then who are we, Ummat-e-Islamiyah? Why can't we shed tears for the Ahlul Bayt? Why can't we? Some people say no, they got a great maqam. Allah had elevated their maqam in Jannat. There's no need for us to mourn them. Yes, we are not mourning them, because we know their maqam. We know Allah had elevated their maqam. But it is that love that we have for them that makes us mourn these days. It is the love that we have for the Ahlul Bayt that brings tears to our eyes when we hear about the tragedy of Karbala. So those people who tell to you that you should not be mourning, you should not be crying. Yes, I'm not telling to you that you must cry loud and scream and cry and hit yourself and do this and do that. No, Ummat-e-Islamiyah, because Rasulullah sallallahu alaihi wasallam did not do that. But he shed tears on hearing that his grandson would be martyred. Allahu Akbar. So when it comes to this 10 days of Muharram, yes, we understand without a shadow of doubt that there are various other events that took place on the 10th of Muharram. This dunya was created. Adam alayhi salam was created. Adam alayhi salam was forgiven. Hazrat Isa alayhi salam was risen to the heaven. Hazrat Idris alayhi salam was risen to the heaven. The world will come to an end on the 10th of Muharram. Yes, we accept that. There's no doubt about it. We have
even have a shadow of doubt. But Ummat-e-Islamiyah, why we commemorate this 10 days? You see, at the time of Musa alayhi salam, the people of Musa alayhi salatu salam should keep fast. Ne? The ummah of Musa alayhi salam commemorated the events of Musa alayhi salam. We accept it because Allah mentions it in the Quran. We have to accept the Quran whether we like it or not. Ne? We have to accept the event of Hazrat Isa alayhi salam because it is in the Quran. About Idris alayhi salam because it is there. Allah saved Hazrat Ibrahim alayhi salam from Namrud. It was the 10th of Muharram. It's in the Quran. We have to accept it. This was the Nabis that came before Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, and they ummat celebrated and commemorated those events. Now we are from the ummah of Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. We should commemorate the events that took place at the time of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam and at the Ahlul Bayt of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. And that is the reason why we commemorate the 10 days of Muharram and we honor the Shuhada at Daste Karbala. It's not that we do not accept the other events. We accept it wholeheartedly. But our love for the Ahlul Bayt allows us to commemorate the Ahlul Bayt, to honor the Ahlul Bayt in these 10 days of Muharram. So when Imam al-Husayn's head was taken on the tip of the sword, it was they marched in Kufa, celebrating that we have killed Hussein. They had a big camp for bonfire. They had the head of Imam, blessed head of Imam al-Hussein on the tip of the sword, and they were going around this fire. They were going around this fire. Who did that? The Yazidis. Why? They were celebrating their victory in their way, Ummat-e-Islamiyah. Today, we celebrate the victory of the Ahlul Bayt in our way. We celebrate and honor the Ahlul Bayt in our way because of the way of the love that we have for the Ahlul Bayt, Ummat-e-Islamiyah. So let us keep in mind that you will get a lot of people who will come and will give you this story and that story and tell you this and tell you that, Ummat-e-Islamiyah. But do not let them take away the love of the Ahlul Bayt, the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam from your heart, Ummat-e-Islamiyah. You will hear all kind of stories, all kind of people will come. Remember, people will come, people will go, and they will be forgotten. But the Ahlul Bayt came, the Ahlul Bayt went, and they will be remembered ta Qayamat tak. Till the day of Qayamat, we will be calling out for the Panjatan Park. We will be calling out for the Ahlul Bayt. We will be calling out for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We will be calling out to the beloveds of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So keep in mind and make dua, Ummat-e-Islamiyah, that Allah subhanahu wa ta'ala keep us like this. Allah keep us with the love of the Ahlul Bayt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in our hearts, Ummat-e-Islamiyah. Make dua that Allah subhanahu wa ta'ala with the sadaqah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the Panjatan Park and the Ahlul Bayt and the Shuhada Daste Karbala. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us all barakah. May Allah grant us good health. May Allah grant us afiyat. May Allah grant us khair. May Allah grant all those who are sick, shifa, all those who have left this dunya, may Allah subhanahu wa ta'ala grant them maghfirah and grant them a lofty abode in Jannah. And we make dua ki Allah subhanahu wa ta'ala on the day of Qiyamah, may Allah keep us under the saya of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, the Ahlul Bayt, the Panjatan Park, the Shuhada, the Daste Karbala, the Khulafa Rashidin, the Sahaba Ikram, the Tabain, the Tabain, the Aimma, the Awliya Kamilin. May Allah subhanahu wa ta'ala accept from me, may Allah accept from you.
and may Allah accept more from our brother Sabir and his family for this beautiful work that they are doing in reminding the people about the love of the Ahlul Bayt and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. May Allah accept from me, may Allah accept from you, and may Allah accept from the entire ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan bil khusus, the lovers of the Ahlul Bayt. وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغِ وَآخِرُ الدَّعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. I know I went over my time, and before anybody tackles me after this program, I'm going to ask you for maaf, inshallah. We have a few questions that we we have 8 questions today, so we have a lot of questions. I don't think I'll remember the answers myself. Okay. Inshallah, by the raise of hands, inshallah, you will be asked to answer. Firstly, who did Imam Hussein call out from the army of Yazid? Who did Imam Hussein call out from the army of Yazid? I don't want names. Who? The strongest men, yes. Alhamdulillah. Just for y'all's information now, Brother Imran compiled all these questions. Number 2, what plan did the army of Yazid come up with to defeat Imam al-Hussein? What is it? Okay, I will accept it. Number 3, what's the only thing that stopped Imam Hussein's sword? Salah, namaz. Who called that namaz? Please pick up your hands when you ask an answer, please. Otherwise we don't know who answered. What was the only way the Yazidis could martyr Imam al-Hussein? Or when was the only time that the Yazidis could martyr Imam al-Hussein? Who? When he went into sajda. Okay, question number 5. How will the punishment of the people who martyred the household of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam stop while Allah is punishing them? When the Ahlul Bayt are pleased. Question number 6. Who and what shed tears when Imam Hussein was made shaheed on the 10th of Muharram? Give 2 examples. 2 examples, G. Okay, I never speak about underneath the stones, but anyway, we'll accept it is true. Question number 7. Where did they march to with the blessed head of Imam al-Hussein on the sword? Why you put this? I never speak about this. Okay, this question here, it was not discussed today, but during the course of the 10 days, we discussed it. Right, so let's see. Give me the name of Mullah Hussein's daughter. Okay, I'm going to ask the question again, and the first one I see is going to answer, inshallah. All right? What is the name of Mullah Hussein's daughter? Right, this hand over here. That color answered, but because you disqualified. G. No, it's not Bibi Zainab. It's not Bibi Zainab. G. Bibi Sakina. We got the answer here.
Oh, he gave the gift back. You go and ask another question now. Okay. What was that? Okay, we gave it to them. Inshallah, let us all stand up for Salatu Salam, inshallah. सुल्ताने करबला को हमारा सलाम हो, जानाने मुस्तफा को हमारा सलाम हो, सुल्ताने करबला को हमारा सलाम हो, अब्बास नामदार भी, अब्बास नामदार हो, जख्मों से चूर चूर, अब्बास नामदार हो, जख्मों से चूर चूर, उस पे करे रजा को हमारा सलाम हो, सुल्ताने करबला को हमारा सलाम हो, जानाने मुस्तफा को हमारा सलाम हो, तारीख ना बुलाएगा प्यारे हुसैन को, तारीख ना बुलाएगा प्यारे हुसैन को, उस जाने मुर्तज़ा को हमारा सलाम हो, और मकबूल हर सलाम ए शाए करबला, मकबूल हर सलाम ए शाए करबला, करबल के शोहदा को हमारा सलाम हो, करबल के शोहदा को हमारा सलाम हो, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुस्लिमीन। अल-फातिहा। اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا وكريمنا وشفيعنا ومولانا ومعوانا وملجانا محمد عبده ورسوله.
اللهم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا شفاعة يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نادي عليا مزح اللجائب تجده عونا لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي بعزمتك يا الله وبنبوتك يا رسول الله وبولايتك يا علي يا علي يا علي. يدركني إلهي بحق بني فاطمة كبر قول إيما خني خاتمة غدا وتمرت خني ورقبول منو دست دامان أهل رسول. إلهي بحق محمد رسول گناہ ما فکر کے دعا کر قبول. ببركتي وبعظمتي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول